हेलो एवरीवन वेलकम टू CHSE कॉन्सेप्ट क्लैरिटी समस्त को आज लाइव सेशन को स्वागत पिला माने समस्त को मो वॉइस क्लियर आछि कि पिला माने मो वॉइस क्लियर आछि कि क्लियर आछि यदि यस कहि दियो हो ठीक अछि हमें से दिन कौन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो कौन डिस्कशन करथिले डी ब्लॉक टा भल से डिस्कशन कर देथिले आज कौन करिबा आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कशन करिबा बुझिला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कशन करिबा तेनो भल से पिले माने बुझिया को चेष्टा करो गोटी गोटी क्वेश्चन बुझिला जो जो रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें से सब को डिस्कशन करिबा देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन अच्छी फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखो डबल सॉल्ट कौन दे यूजुअली कंटेन्स टू सिंपल सॉल्ट्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन माने दीटा सिंपल सॉल्ट इक्विमोलर प्रोपोर्शन माने गोटे निर्दिष्ट अनुपात रे मिश्रण हेले इक्विमोलर प्रोपोर्शन ए ताकू कहा जाय डबल सॉल्ट कोन कहा जाय डबल सॉल्ट कहा जाय दे यूजुअली कंटेन्स टू सिंपल सॉल्ट्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन बुझिला तापरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बा कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कहा जाय देखो तो सिंपल सॉल्ट्स फ्रॉम व्हिच they are formed may or may not be in equimolar proportion ये कहिची जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ता सिंपल सॉल्ट रो तयारी हेची सेटा मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन एटा इक्विमोलर प्रोपोर्शन रे रहबे एटा मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन एटा इक्विमोलर प्रोपोर्शन रे रही परंती बा न रही भी परंती बुझिला तापर कोन दिछि दे आर आयोनिक कंपाउंड्स and do not contain any coordinate bond एमाने होचनी कोन आयोनिक कंपाउंड एमाने कोन करंती नै कंटेन करंती नै कोनोसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेन करंती नै एटा कोन अब दे मे और मे नॉट बी आयोनिक बॉन्ड बुझि बोले आयोनिक कंपाउंड्स द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज ऑलवेज कंटेन्स ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड ताले कोन कहला एमाने होचनी आयोनिक कंपाउंड किंतु एमाने मे और मे नॉट बी आयोनिक कंपाउंड एंकर एमाने कोनोसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेन करंती नै एंकर कॉम्प्लेक्स पार्ट ता सब बेले कोन गोटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेन करे बुझि बैलो तो तापरे द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट आर सेम एज दोज ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंट माने दो दीटा सिंपल सॉल्ट मिसी कि डबल सॉल्ट ता तेरेची तार कोन प्रॉपर्टी ता से कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड रो प्रॉपर्टी से तो सेम थाए किंतु एथिरे कोन द प्रॉपर्टी ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर द डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड माने ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड मिसी की जो प्रॉपर्टी कंपाउंड ता हेते कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ता सेटा ता प्रॉपर्टी ओरिजिनल कंपाउंड हो कोन थाए डिफरेंट थाए बुझिला ताले फर्स्ट पॉइंट कोन कहले से माने कोन होचंदी दीटा सिंपल सॉल्ट इक्विमोलर प्रोपोर्शन रे रहले ता कह जे डबल सॉल्ट किंतु कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोन से माने इक्विमोलर प्रोपोर्शन रे रही पारंती बा न रही पारंती बुझिला सेमती एमाने होचंदी कोन आयोनिक कंपाउंड आ से माने कोन करंती नै कोनोसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेन करंती नै एमाने होचंदी कोन दे आर मे और मे नॉट बी आयोनिक बुझिला दे कोन दे मे और मे नॉट बी आयोनिक बट द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज ऑलवेज कंटेन्स ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड किंतु ताकर कॉम्प्लेक्स पार्ट ता कोन गोटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोन करे कंटेन करे बुझिला तापरे द प्रॉपर्टी ऑफ डबल सॉल्ट जो डबल सॉल्ट रो प्रॉपर्टी कोन होय ताकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड जो दीटा कंपाउंड एकाठी हेकी तयारी छंती ताकर तार प्रॉपर्टी डिफरेंट थाए किंतु एतरे कोन थाए ए सॉरी एटा कोन थाए सेम थाए किंतु एतरे डिफरेंट थाए बुझिला तापरे एग्जांपल दे दबा मोर सॉल्ट पोटासियम कार्नालाइट बुझिला तो मोर सॉल्ट पोटासियम कार्नालाइट आउट पॉइंट कोन ए डबल सॉल्ट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन ये तारा आइडेंटिटी टा को लॉस कर दिए ये तारा आइडेंटिटी टा को धरि रखे रिटेन इट्स आइडेंटिटी माने बुझिला तो ये तारा आइडेंटिटी हरै दिए किंतु ये ता आइडेंटिटी रिटेन रखे द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन ए रोड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एग्जांपल दे दो K4 FeCN होल 6 बुझिला डबल सॉल्ट गला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रा डिफरेंस गला समस्त पिले माने बुझि पर लगी यदि बुझि परला यस कहि दियो समस्त ने बुझि लगी
ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगांड आमर विभिन्न प्रकार अच्छे बुझीगला तो मोनोडेंटेड बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड चिलेटिंग एम्बिडेंटेड ब्रिजेटिंग विभिन्न प्रकार लिगांड सब अच्छी किंतु इंपोर्टेंट होची कोन आमर होची बाइडेंटेड लिगांड एम्बिडेंटेड लिगांड और चिलेटिंग लिगांड परीक्षा पई एई तीनोटी लिगांड बहुत इंपोर्टेंट बुझीगला तो ताले लिगांड प्रथम जिनस को लिगांड कोन लिगैंड कौन एन आयन और मॉलिक्यूल सेटा गोटे आयन हे पारे बा मॉलिक्यूल हे पारे एन आयन और मॉलिक्यूल कैपेबल माने समर्थ ऑफ डोनेटिंग एटलीस्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन डोनेटिंग एटलीस्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काहाकू टू द सेंट्रल मेटल एटम आयन और मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एटलीस्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काहाकू टू द सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड माने गोटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करिया पई जो आयन बा मॉलिक्यूल कैपेबल बा समर्थ कौन करिया डोनेट एटलीस्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोटे एटलीस्ट गोटे पेयर इलेक्ट्रॉन कहा करिवो डोनेट करिवो सेंट्रल मेटल एटम को कौन पई टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड दैट इज लिगैंड देखो एम्बिडेंटल लिगैंड कौन भलसे बुझियो चेष्टा करो दीज आर द अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगैंड व्हिच हैव टू डिफरेंट डोनर साइड यार कौन थाए दीटा डिफरेंट डोनर साइड थाए but only one of them is attached to the central metal atom at a given time कोन किंतु तांका भितर केवल गोटिए सेंट्रल मेटल सहित अटैच हे परिबो गोटे निर्दिष्ट समय ताले कोन कहला these are unsymmetrical bidental ligand which have two donor atom जार कोन थाए दुईटा डोनर साइड थाए but only one of them तांका भितर केवल गोटिए attached to the central atom at a given time central atom सहित केवल गोटिए कोन हबो अटैच हबो गिवन टाइम रे निर्दिष्ट समय रे केवल गोटिए एटम जे कि कोन हबो गोटिए डोनर साइड जे कि अटैच हबो सेंट्रल एटम सहित एग्जांपल देखो थायोसियानेट आइसोथायोसियानेट SCN NCS उल्टाटा बुझिला तो थायोसियानेट आइसोथायोसियानेट तला एम्बिडेंटल लिगैंड बुझिलो एमान होछन्ते अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगैंड which have two donor side कारण two different donor side but only one of them is attached to the central metal atom at a given time बुझिला तापर नेक्स्ट आसला चिलेटिंग लिगैंड कोन पिला माने भलसे बुझो चिलेटिंग लिगैंड कोन when a bidentate or a polydentate ligand कोन होय जतले गोटे बाइडेंटेड हो किबा पॉलीडेंटेड लिगैंड हो अटैच थ्रू केमिति अटैच हेतै थ्रू टू और मोर डोनर एटम्स कोन थ्रू टू और मोर डोनर एटम कहा माध्यम रे डीटा किबा ताठारो अधिक डोनर एटम माध्यम टू द सेंट्रल मेटल एटम कहा सहित सेंट्रल मेटल एटम फॉर्मिंग ए रिंग स्ट्रक्चर गोटे रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करे से लिगैंड को चिलेटिंग लिगैंड कहै ताले कोन कहला when a bidentate or a polydentate ligand सेटा गोटे बाइडेंटेड हो बा पॉलीडेंटेड लिगैंड हो अटैच हेबो कहा सहित सेंट्रल मेटल एटम कहा द्वारा थ्रू टू और मोर डोनर एटम्स कहा द्वारा कोन दीटा किबा ताठारो अधिक डोनर एटम द्वारा आ गोटे रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करतो दैट इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगैंड ता कोन को जाय चिलेटिंग लिगैंड पिला माने को जाय आ से कॉम्प्लेक्स टा कोनती चिलेट आ से प्रोसेस टा को कोनती चिलेशन कोन से प्रोसेस टा कोन कोनती चिलेशन कोनती आ से रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स को कोन कोनती चिलेट कोनती इथिलीन डायमीन होची तार एग्जांपल हैला स्ट्रक्चर टा देखले पिला माने बुझी परिबो देखो स्ट्रक्चर टा देखो पिला माने केंदे हिची देखो स्ट्रक्चर केंदे हिची CH2 देखो CH2 NH2 CH2 NH2 एटी गोटे रहइबो कोन सेंट्रल मेटल एटम बुझी पइलो तो एटा रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कले ताको कोन को जाय हमरो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कले ताको कोन को जाय हमरो चिलेटिंग लिगैंड को जाय कोन को जाय चिलेटिंग लिगैंड को जाय भल से पिला माने बुझियो चेष्टा करो तापर आसला EDTA कोन EDTA गोटे शॉर्ट नोट व्हाट इज EDTA स्टैंड्स फॉर इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड कोन इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड बुझियला तो तापर इट इज ए हेक्साडेंटल लिगैंड एटा कोन हेक्साडेंटल लिगैंड
देखो पिला माने EDTA कोन EDTA stands for ethylene diamine tetraacetic acid तापर कोन it is a hexadental ligand which means a single molecule can occupy 66 stereochemical position around a metal atom कोन ताले कहला भलसे पिला माने बुझियो चेष्टा करो कोन it is a hexadental ligand एटा होची कोन hexadental ligand जहा means कोन which means a single molecule can occupy 6 stereochemical position all around a metal atom. Hence the coordination number of EDTA is कौन होबो coordination number ता माने कौन होबो 6 होबो बुझि पाइलटी तले कौन होबो coordination number 6 होबो कारण एटा होची गोटे कौन hexadental ligand से में ता coordination number कौन होबो 6 होबो तापरे तापरे नेक्स्ट देखो तापरे आसिला व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ताले कोन कहला लेन क्वेश्चन टा भल से बुझियो चेष्टा करो एटा होची गोटे रीजनिंग क्वेश्चन व्हाई इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स tetrahedral complex do not show geometrical isomerism because of the following two reasons को दिटा कारण देखो all the four ligands are adjacent and equidistant कोन and equidistant to one another in a कोन tetrahedral complex ताल कोन होला all the four ligands चारटा ligand को हुए are adjacent माने पाखा पाखी और equidistant पाखा पाखी बुझि पाइला adjacent जहा equidistant है of one another in the tetrahedral complex रे माने कोन tetrahedral complex रे जो चारटा ligand adjacent हे थांती बा equidistant रे परस्पर उ थांती in tetrahedral complex बुझला तापर कोन तापर आसिला the relative positions of donor atoms of ligands attached to the central atom are the same with respect to each other तले कोन कहला the relative positions of donor atom रो relative position of ligand attached to कहा सहित central metal atom are same with respect to each other एमन कोन थांती सेम थांती with respect to each other बुझिला ए जो फैक्ट मोर आइसोमेरिज्म एटा तमरा कोर्स रे नाही तेनु ए क्वेश्चन बुझि पाइलो एटा होची रीजनिंग क्वेश्चन व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तापर नेक्स्ट आसिला स्ट्रांग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड ले माने भल से बुझियो चेष्टा करो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड्स कोन वीक फील्ड लिगैंड्स कोन देखो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड्स आर दोज in which donor atoms are carbon nitrogen or phosphorus ताले strong field ligand का को जाय जे को जाय in which donor atom ओरा कोन carbon nitrogen phosphorus donor atom होची कोन carbon nitrogen phosphorus Cn- Nc- cobalt NH3 EDTA En होची ethylene diamine बुझिला तो are considered to be strong ligand बुझि पाइला तो दोतरे donor atom कोन दिबो carbon nitrogen phosphorus दिबो से मानले strong field ligands weak field ligands कोन weak field ligand are those in which donor atoms are halogens oxygen or sulfur halogen थिबे oxygen थिबे sulfur थिबे halogen माने chlorine bromine iodine that is strong field ligand weak field ligand बुझिला तो weak field ligand कोन जोतरे donor atom कोन halogen oxygen sulfur आ strong field ligand कोन जोतरे donor atom carbon nitrogen phosphorus बुझिला असला EAN rule the total number of electrons possessed by central metal atom kono total number of electron possessed by central metal atom plus the electron gained by it from the ligand attained to nearest inorganic configuration is known as effective atomic number tar formula hochi kono En no formula hochi Z minus X plus 2 into N Z ta kono atomic number of the central metal atom X ta kono oxidation number of central metal atom N ta hochi coordination number En of nickel in nickel carbonyl is 28 atomic sorry 28 no En rule पके दो कोन atomic number पके की oxidation state बाहर करके एटा पकेला आराम रे तमे आंसर पाइ जिवो बुझियला तले En rule कोन the total number of electrons possessed by the central metal atom total number of electron possessed by कोन central metal atom to the plus the electron gained by it from the ligand to attain the nearest inorganic configuration is known as effective atomic number तापर असला limitations of VBT
It does not explain inertness of a certain complex. It does not explain temperature dependent paramagnetism. It does not explain the structure of the complex. it does not explain stability. बुझिपारे तेणु विभिन्न प्रकार लिमिटेशन हम बीबीटी रो does not explain stability, does not explain color of the complex, it does not explain inertness of certain complex, it does not explain the temperature dependent paramagnetism. तेणु विभिन्न प्रकार अच्छी तेणु ये सब बाकी क्वेश्चन ये गला कौन आमर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ले डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिफरेंस एम्बिडेंटेंट चिलेटिंग मु आउतरे बाइडेंटेंट टा कहि दउची कोन the ligand the ligand in which there are two donor sites is known as bidental ligand. If the two donor sites are same, that is symmetrical bidental ligand. If the two donor sites are different, these are unsymmetrical bidental ligand. Yeah, symmetrical example of ethylene diamine और unsymmetrical example of oxalate anion. बुझला तापरे ligand सरी गला तापरे एबे देखो हमरो Werner's coordination theory important 3 मार्क के क्वेश्चन Werner's coordination theory. देखो Werner's coordination theory ता एतर 3 मार्क के जब लॉन्ग क्वेश्चन पकेला भी ता संग कोन दुईटा आईयूपीएससी नेमिंग अटैच करी पकेबो बुझला तने भलो से बुझियाउ चेष्टा कर. देखो Werner's coordination theory कोन the important postulates of Werner's coordination theory are metal possess two types of valency. गोटे होची primary और ionizable valency और होची secondary और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी. गोटे हला कोन प्राइमरी वैलेंसी और हला सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी का को जे देखो कंपेयर करी पड़ो भल से बुझी परिबो. प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन व्हिच इज सैटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन इज इट कॉरेस्पोंड टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम और आयन. देखो एतर सेमती सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सैटिस्फाइड बाय आइदर नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल. एतर कोन दिला सैटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन एठी कोन दिला satisfied by either negative ion or neutral molecule. बुझिला तो तापर कोन देछि it is represented by dotted lines, it is represented by solid lines. तापरे it corresponds to the oxidation state of metal atom, it corresponds to the coordination number of metal atom. तले यार ऑपोजिट होछि कोन हमरो प्राइमरी वैलेंसी रो ऑपोजिट होछि सेकेंडरी वैलेंसी. बुझिला तो फास्ट पॉइंट समझते क्लियर की फास्ट पॉइंट बुझबे लगी. फास्ट पॉइंट कोन दला प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सैटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन. एतर कोन दला सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सैटिस्फाइड बाय आइदर नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल. तापर कोन दला इट कॉरेस्पोंड टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम और आयन. एते कोन दला इट कॉरेस्पोंड टू ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एटम और आयन. तापर कोन कहला इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय solid lines. तापर considering some simple sorts like AgNO3, NO3, CuSO4, COCl3, PtCl4, we can say that primary valency of AgNO3 रे A0, copper sulfate रे copper रो, COCl3 रे कोन कोबाल्ट रो और PtCl4 रे platinum रो 1 2 3 4. देखो Ag plus NO3 minus बुझिबेलटी एटी Cu plus Cu2 plus SO4 2 minus सेंदी CO3 plus Cl3 minus एटी कोन तापर Pt तापर कोन आसला PtCl4 रे Pt4 plus Cl4 minus बुझिबेलटी 1 2 3 4 respectively. एतरा कोन देला according एटा कोन देला they form the coordination sphere of metal atom or ion कोन are non ionizable. जो से माने फॉर्म करंदी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ मेटल एटम और आयन से माने होजन कोन नॉन आयोनाइजेबल. बुझिला these valency are non directional. यांकर valency कोन non directional. बुझिला the species which satisfy the primary valency don't give any geometry to the compound. जो species कोन करे primary valency satisfy करे से कोन कोनोसी geometry देनी compound को. सेंती एतरे कोन कहला every atom has a fixed number of secondary valency. Every metal atom has a fixed number of secondary valency of coordination number. कोन तले every metal atom रे कोन थाए fixed number of secondary valency थाए बा coordination number थाए.
तापर एवरी एलिमेंट्स टेंड टू सैटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ये थिला हमर कोन प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी 3 मार्क पड़ले लिखि परियो पिला माने तापर देखो application तार कोन application कोन limitations कोन all theory this theory is able to predict the formula of a complex it is helpful in predicting the structure of different complex ये कोन करे predict the formula predict करि पारे बुझि पेलो तो तापर आ कोन हां तापर कोन it is helpful in predicting the structure of different complex it can explain the difference behavior of a different complex compound having same metal and ligand बुझि पाइलो तो this theory can explain the isomerism such as ionization hydrate it can also explain geometrical and optical isomerism बुझिला तो limitation कोन this theory does not explain cause of color geometry magnetic property of the complex compound color explain कलानी geometry explain कलानी magnetic property complex compound explain कलानी तापरे this theory has no theoretical justification this is because the electronic theory which forms the basic of bonding was not known at that time सेठी कोन थिला बेसिक ऑफ कोन बॉन्डिंग was not known at that time से समय रे कोन बेसिक थ्योरी जना नथिला बॉन्डिंग रो बुझि पाइलो तापर आसला आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म का कजे देखो two or more chemical compounds having same molecular formula but different structural arrangement माने जहार मोलिकुलर फॉर्मूला सेम थिबो किंतु स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट थिबो ताकू कजे आइसोमर्स और से फेनोमेनन को कहते आइसोमेरिज्म कोन से फेनोमेनन को कहते आइसोमेरिज्म बुझिला तो आ मन तो कोन डीए ब्लॉक रु लिखिबो ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डीए ब्लॉक रु लॉन्ग क्वेश्चन करिया पे सबले चेष्टा करबो बुझिला कौन देला two or more chemical compounds having the same molecular formula but different structure जार same molecular formula थिबो पण different structural arrangement थिबो ताको आइसोमर को जाय अब फेनोमेनन को कोनती आइसोमेरिज्म बुझिला तापरे विभिन्न प्रकार अछि गोटो होची स्ट्रक्चरल स्टेरियो स्ट्रक्चरल अंडर रे जाउची देखो परीक्षा पे होची आयोनाइजेशन लिंकेज आइसोमेरिज्म बहुत इंपोर्टेंट बुझिला तो देखो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कोन ए सब तो तमे पढिबो म नोट्स दे देबी किंतु आयोनाइजेशन लिंकेज टा को भल से पढिबो सेटा ए वर्ष एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जार सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिबो बट गिव डिफरेंट आयन्स इन सॉल्यूशन सॉल्यूशन भितरे डिफरेंट आयन प्रोवाइड करथिबे से माने कोन दे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म तले कोन कहला तो कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयन्स इन सॉल्यूशन सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन्स दियंती त कोन दे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एग्जांपल दिया छि COBr NH3O5SO4 CONH3O5SO4Br एटी ब्रोमीन टा बाहर पळेला एटी देखो एटी ब्रोमीन टा भीतर अछि सेटी ब्रोमीन टा कहला बाहर को पळे आसला बुझि पाइलो तो एटी SO4 टा बाहर अछि SO4 टा भीतर पळेला बुझि पाइलो कारण कोन देछि गिव डिफरेंट आयन्स इन सॉल्यूशन सॉल्यूशन भीतर डिफरेंट आयन दियंती तापर आसला लिंकेज आइसोमेरिज्म देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म रो स्ट्रक्चर केंदी कराई छि लिंकेज आइसोमेरिज्म कोन तो कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिंकेज रो भी कोन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जेंते हम आयोनाइजेशन पढ़ले सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोन दबो सेटा कोन दबो गिव डिफरेंट आयन्स इन सॉल्यूशन किंतु एटा कोन बट डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगैंड टू द सेंट्रल मेटल एटम त कोन कोन कहलो एटा होची सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थिबो किंतु अटैचमेंट टा सेंट्रल एटम सहित डिफरेंट थिबो ताकू कहै छै लिंकेज आइसोमेरिज्म बुझि पाइलो ज्योमेट्रिकल होची सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिंकेज आइसोमेरिज्म रो भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किछु तो अटैचमेंट ऑफ कोन अटैचमेंट ऑफ मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगैंड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम आर डिफरेंट बुझि पाइलो मोड ऑफ अटैचमेंट कोन थाए सेंट्रल मेटल एटम सहित डिफरेंट है ताको जे कोन लिंकेज आइसोमेरिज्म तले हम पढ़ले आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कोन लिंकेज आइसोमेरिज्म कोन बाइडेंटेड एबिडेंटेड चिलेटिंग लिगैंड डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ कोन डबल सॉल्ट तापर आ कोन पढ़ले स्ट्रांग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगैंड तापर ओडे रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करले ये एन रूल पढ़ले एती क्वेश्चन पिला माने भल से लिमिटेशंस ऑफ बीपीटी एती क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रो एग्जाम पे प्रैक्टिस कर हे जिवो लॉन्ग क्वेश्चन पे बॉन्डिंग और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बीपीटी रो देखिवो जदी पिला माने कार कोन डाउट अछि ताले पछर कार कोन डाउट अछि कि पिला माने काली ऑर्गेनिक रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कशन करी साथ दबा कार कोन डाउट अछि कि पिला माने जदी बुझियार अछि ताले पछर
लॉन्ग क्वेश्चन इनऑर्गेनिक रो सुनो लॉन्ग क्वेश्चन डीएफ ब्लॉक रू व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट डेफिनेशन ता सहित कौन सी जोड़े प्रॉपर्टी को अटैच करी पकेबो नहले हमर पोटेशियम परमैंगनेट रो प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पकेबो नहले हमर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कॉजेस कॉन्सिक्वेंस सहित गोटे क्वेश्चन अटैच करी पकेबो आ ए चैप्टर रू जदी लॉन्ग क्वेश्चन कहबो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रो बॉन्डिंग आ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट आ गोटे होची वेर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ता सहित दीटा आईयूपीएसी नेमिंग पकेबो हाँ हाँ लॉन्ग क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर दियो भल से मन रही जो डीएफ ब्लॉक रो लॉन्ग क्वेश्चन डीएफ ब्लॉक रो होची बा व्हाट इज डी ब्लॉक एलिमेंट बा ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सप्लेन एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट बेसी इंपोर्टेंट होची हमर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड मेटालिक कैरेक्टर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ डी मार्के पे प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट होची हमर फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस माजे क्वेश्चन अपलोड कर देछि टेलीग्राम रे अपलोड कर देछि ऑर्गेनिक रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनऑर्गेनिक फिजिकल इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज अपलोड कर देछि जाकी टेलीग्राम रे देखि दियो जो मान टेलीग्राम रे जॉइन हैन लिंक डिस्क्रिप्शन अछि जाई जॉइन हेजो आउ कार कोन पिला ने बुझियर अछि की फाराडेस लॉ देखो फाराडेस लॉ सहित गोटे प्रॉब्लम अटैच करी पकेबो खाली फाराडेस लॉ पड़ी बोले माने नै आ होची हमर मुख्य होची कोटा कहला कोहलास लॉ ता बेसी इंपोर्टेंट लागुची आ जो 3 मार्क पय तो गाल्वानिक सेल अछि तापरे नॉस्ट इक्वेशन अछि तापरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अछि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल अछि सब 3 मार्क क्वेश्चन बे इंपोर्टेंट हां फाराडेस लॉ आसेर बेसी चांसेस अछि एतरबो किंतु गोटे प्रॉब्लम अटैच करी तसे पकेबो डायरेक्ट पड़िबो नै आउ कार कोन बुझियर अछि कि पिला माने ऑर्गेनिक रो क्वेश्चन प्रोवाइड कर देछि श्रुति ऑर्गेनिक रो क्वेश्चन प्रोवाइड कराई छि टेलीग्राम रे जाई देखिनियो प्लान जेति जेति क्वेश्चन रे अल्प बहुत क्वेश्चन भल से प्रैक्टिस करो जेते लिखि परिबो खाली पढ़ी देले केमिस्ट्री मन रहबनी गुडाय कांसेप्ट अछि बुझि पाइलो तो तेनो भल से जाई प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल वीडियो में अपलोड कर देछि जाई देखि दबो हमर केमिकल काइनेटिक्स रो न्यूमेरिकल देखि देले हिजबो सॉल्यूशन रो न्यूमेरिकल देखि देले हिजबो वेराइटी रो न्यूमेरिकल्स कोन रश्मि रंजन साहू जानियो चाहछो को थैंक यू फॉर योर कमेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलिबा फाराडेस लॉ सहित गोटे प्रॉब्लम लॉन्ग क्वेश्चन पकेबो कोहलास लॉ सहित प्रॉब्लम आइदर पकेबो नल डायरेक्ट कोहलास लॉ पकेबो मु लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन कर देछि जे देखि नबो तापर आउ इंपोर्टेंट होछि नॉस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बुझेलाटा इसी जोटा आ जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तापर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल एटा कंपलसरी क्वेश्चन कोरोजन हां फाराडेस लॉ सहित न्यूमेरिकल अटैच करी पकेबो ऑर्गेनिक रो क्वेश्चन रश्मि रंजन आज टेलीग्राम रे अपलोड कर देछि जाई कि देखिनियो चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखाई अछि हो ठीक अछि पिला माने लाइव सेशन को एंड करबा मु बेसी समय तुम नौनी तो माने सेल्फ स्टडी ऊपर गुरुत्व दियो जत्ते परचो सते क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जदि कार कोन डाउट आसीबो कमेंट माध्यम रे जणैबो समस्त लाइव क्लास जॉइन करथिबारु समस्त हृदय अशेष अशेष धन्यवाद हां फाराडेस लॉ रो डायरेक्ट प्रॉब्लम पड़िबो so today this much thank you have a nice day thank you all for joining this live class thank you हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर टा इंपोर्टेंट बुझिले